आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने सैमसंग मोबाइल ग्रैंड प्राइम प्लस G532 का जो है वो टच किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अली और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब Mobile.Pk यूट्यूब मोबाइल रिपेयरिंग चैनल। अपने इस चैनल पे मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं या अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे होगी आप तमाम दोस्तों के लिए न्यू मोबाइल की अनबॉक्सिंग। तमाम दोस्तों से इल्तमास करता हूँ वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए लाऊं मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल की अनबॉक्सिंग वीडियोज़। चलें जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप भी अपना मोबाइल जो है वो ठीक कर सकते हैं या इस तरीके से आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अपने मोबाइल का टच जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ।
देख रहे हैं जी आपके सामने। अब मैंने मोबाइल का जो टच है वो बेहतर तरीके से रिप्लेस कर लिया है और इसकी जगह नया टच भी लगा दिया है। अब इसके ऊपर रबड़ लगा के इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा और 2 घंटे के बाद खोल के आप मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें मोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।